अगर आप अपनी लाइफ में इस समय किसी ऐसी सिचुएशन में हैं जहां यू आर फीलिंग लॉट ऑफ पेन एंड सफरिंग जस्ट बिकॉज आप कुछ अपनी लाइफ में चाहते हैं और वैसा नहीं हो पा रहा है, देन दिस वीडियो इज़ फॉर यू। बिकॉज आज इस वीडियो में बात करेंगे लेटिंग गो यानी कि डिटैचमेंट की, विच इज़ अ वेरी इंपॉर्टेंट पार्ट इन योर मैनिफेस्टेशन जर्नी। आप जब भी कुछ चाहते हैं तो ये एलिमेंट आप कैसे यूज़ कर सकते हैं। So I'm going to give you a step-by-step guide to letting go and detachment. So we'll dive deeper into the concepts and let's get started. नमस्ते, मेरा नाम लीना छाबड़ा है और मैं एक स्पिरिचुअल माइंडसेट कोच हूँ। तो पहला स्टेप है, हम ये समझते हैं कि वाई वी फाइंड इट डिफ़िकल्ट टू लेट गो। हमें पता है कि हमें अटैच नहीं होना चाहिए, काफ़ी बार शायद आपने सुना भी हो इस बात को, बट देन वी फाइंड इट वेरी डिफ़िकल्ट। हमको वो चीज़ चाहिए तो हम उसको भुला नहीं पाते, सबकॉन्शियसली हमारे दिमाग में कहीं ना कहीं वो चीज़ रहती है। So the first part which I'll be telling you is why we find it difficult, because there is a fear। एक डर होता है कि अगर मैं उस चीज़ के बारे में नहीं सोचूं या उसके लिए मैं कोई कार्य नहीं करूं, इफ़ आई डोंट टेक एक्शन स्टेप्स टूवर्ड्स इट, मैसिव एक्शन स्टेप्स तो आप लेते हैं बट आप सफ़र करते हैं जब आपको रिजल्ट्स नहीं दिखते। सो व्हाट एम आई नॉट डूइंग करेक्टली, तो इतना ज़्यादा हम अटैच हो जाते हैं कि हम सब कॉन्शियसली सिर्फ उसी चीज़ के बारे में सोच रहे होते हैं। सो इट्स द फेयर दैट ऑफ लेटिंग गो, दैट इफ़ आई डोंट डू दिस, इफ़ आई डोंट टेक एन एक्शन, सो व्हाट विल हैपन, सारी चीज़ें ख़राब हो जाएंगी, चीज़ें जैसा मैं चाहता हूँ बिल्कुल वैसी नहीं हो पाएंगी। सो दैट इज़ द मेजर रीज़न। सो नंबर, इसे समझने के लिए एक हम समझते हैं कि किसी उदाहरण की तरह। सो लेट्स से अगर आपको अपनी लाइफ में आपके अगर हेल्थ इश्यूज़ है, सो यू हैव दिस हेल्थ इशू दैट यू हैव बीन टोल्ड दैट यू हैव बीन डायग्नोज्ड फ्रॉम सम डिसीज़। अब आप उसके लिए मैसिव एक्शन ले रहे हैं, आप सारे डॉक्टर्स के पास जा रहे हैं, सारी दवाइयाँ ले रहे हैं, पर आप क्या कर रहे हैं, उस परेशानी की वजह से पेन में हैं और उस डिसीज़ की वजह से आप पेन और परेशानी और सफरिंग आपको महसूस हो रही है। Now, what is happening in this whole situation is this, because you are so much attached to that thing getting cured. जो आपकी चीज़ है आप उसे क्योर करना चाहते हैं, विच इज़ अ वेरी पॉजिटिव इंटेंशन, कोई बुरी बात नहीं है। बट उसमें क्या होता है, आप द मोर रेजिस्टेंस यू हैव, मोर रेजिस्टेंस का मतलब है कि जो सच्चाई है आप उसे नकार रहे हैं। दैट मीन्स यू आर नॉट एक्सेप्टिंग दैट दिस इज़ वॉट इट इज़ इन दिस मोमेंट। तो द मोर अटैचमेंट यू हैव to healing that thing, the more attachment you have, the more resistance you have। and आप लाइफ में जिस भी चीज़ के लिए ज़्यादा रेजिस्टेंस, जो चीज़ आपको पसंद नहीं है आप उसे ना ना और ना बार बार कहते हैं, वो चीज़ इनफैक्ट एनर्जेटिकली आपकी लाइफ में और ज़्यादा बढ़ जाती है। सो आई एम टेलिंग यू फ्रॉम माई एक्सपीरियंस व्हेन पीपल कम टू माई कोचिंग। तो काफ़ी बार मैंने सुना है लोग कहते हैं कि आई हैव शोन इट टू द बेस्ट डॉक्टर्स, इवन मैंने अब्रॉड में सबको दिखा दिया एंड उसके बाद भी मुझे पता चला है कि इसका कोई रिजल्ट, इसका दिस इज़ नॉट क्योरेबल। सो लेट मी टेल यू दिस बिलीव्स व्हाट वी गेट and has been wired into us because of our childhood or whatever। so वो beliefs जो हैं हमारे को, जो miracles जो हम करना चाहते हैं अपनी लाइफ में एक्सपीरियंस, वो नहीं हो पाते हैं। दैट इज़ वन थिंग। सो first of all, we have to understand the truth that it is our attachment। I gave you an example of healing. You could have taken this example for even of abundance। If you're looking for wealth in your life and you're taking all the action steps, आप सारी तरह के काम कर रहे हैं, सब जॉब कर रहे हैं, बट फिर भी आप लैक में हैं इस समय। यू कैन टेक इट इन रिलेशनशिप ऑल्सो। आपके रिलेशनशिप्स में भी आपने ऐसा महसूस करा होगा कि ये पीपल डोंट टर्न अप, आपके पास आपके ज़्यादा अच्छे फ्रेंड्स नहीं रहते हैं। एनी एरिया you talk about, because the more you resist, the more you are giving it energy। so you have to understand that thing, that's universe always gives you what is a vibrational alignment to you, so what you are vibrating at। so यहाँ पे आपकी align vibration क्या है इस समय? I, beneath all this is I don't have it। this is how we have been projecting things outside to the universe, because हम जब actions भी लेते हैं, कुछ भी काम करते हैं, तो beneath that is that I want it, I don't have it and I want to। although the positive intention is there कि हमें ठीक होना है, हमें और पैसे चाहिए या हमारे को अच्छा relationship चाहिए, but beneath all this is that you are in lack and your vibrational frequency is returning to you। the universe talks in terms of energies में बात करता है। it is telling you that you're not happy, so take off more of this, take more of this। that is one thing। so this is why we find it difficult, because of the resistance। moving on to the next thing,
Now, how you could let go? Now, what's the solution to this? Now you've understood that concept. So if you've understood the concept, then type in, if this makes sense, then you please type in the comments below that it makes sense to you. I'll be moving on to the second thing now. Very important part. ठीक है, आज आपने कॉन्सेप्ट समझ लिया. ओके, नाउ आई गॉट इट, कि वाइब्रेशन, आई वाज रेजिस्टिंग, सो आई एक्सेप्ट दैट थिंग. So I do accept that thing. Then what next? But the problem is this: the more you understood the concept, you have been through a lot of videos or text, आपने सब चीज़ें समझी. बट स्टिल उसके बाद भी कहीं आपके अंदर एक आवाज़ होगी, आज आप शायद ये वीडियो देख लें, उसके बाद यू विल ट्राई टू अप्लाई इन योर लाइफ एंड यू विल से नहीं, चलो लेट गो, आई लीव इट, आई नॉट थिंक अबाउट दैट थिंग, आई एक्सेप्ट दैट इट इज़ देयर इन माई लाइफ. बट कहीं पे भी आपके अंदर से एक आवाज़ आएगी, वो आदत से मजबूर, आई होप दिस हैपन्स, आई होप ये हील हो जाए, आई होप मेरे बच्चा ऐसा बिहेव कर ले, आई होप मेरे रिलेशनशिप यहाँ से बेटर हो जाए, आई होप दैट आई गेट मोर मनी और समथिंग. So all your areas, that voice is still there. So the energy still is there of resistance. Again we start resisting. तो ये तो vicious loop हो गया. So now what is the solution? The only solution what I would suggest in this thing is be vulnerable today. So what you can do, one exercise, express yourself, whatever you're feeling inside. Because आपके जो emotions, आपको पहले वो energy को release करना है, how to get into that vibrational alignment. Be vulnerable means show your weakness. So, okay, this is how I feel. So that is what your weakness is like. Now ये weakness आप किसी ऐसे person को बता सकते हैं अपनी, how, what are your true feelings about all this, rather than you avoiding that thing. You trust somebody and you want to share with that person, or even if किसी के लिए आपको इल फीलिंग है, आप ही के फैमिली का मेम्बर है, इट कुड बी योर चाइल्ड, इट कुड बी योर मदर इन लॉ, वट एवर एग्जाम्पल यू वॉन्ट टू टेक. अगर आप, और योर हस्बैंड, योर स्पाउस और योर वाइफ, एंड यू वॉन्ट टू टेल कि दिस इज़ हाउ आई एम गेटिंग हर्ट बिकॉज ऑफ योर ways that you are behaving. तो अगर उस चीज़ को आप थोड़ा पॉलिश करके यू कैन टेल दैम दैट थिंग, मे बी दिस इज़ हाउ आई परसीव्ड, जो आपने मुझे बोला था, दिस इज़ हाउ आई परसीव, मे बी आई एम रॉन्ग, सो आई जस्ट वॉन्टेड टू शेयर विद यू. ये दिस इज़ being vulnerable. It could be, you can be vulnerable to the social media if you want, wherever you want, whatever is easy for you, आप वो करके देखिए. But इसमें भी है, you heard today Leena telling, oh wow, this is good thing, I'll go, I'll be vulnerable. It's a good intention, ना, अच्छी intention के साथ जा रहे हैं. We are being, showing our weakness and sharing it with others. But यहाँ पे भी है, अगर आप अपनी vulnerability इस intention के साथ करते हैं कि I'm going to be who I am, I'm going to show my true self, this is what I feel, this is how my feelings are, then it is okay. But if you are going with an intention that this is how I heard in that video, I read in that text कि हमें vulnerable होना चाहिए, आप जाके vulnerability दिखाते भी हो और उसके बाद रिस्पॉन्स क्या आता है, एकदम उल्टा, सामने वाला आपसे गुस्सा हो जाता है, एजिटेटेड हो जाता है, वाला रिएक्शन होता है. द रीज़न इज़ क्योंकि उस समय आपकी सबकॉन्शियसली आपकी इंटेंशन थी कि मैं आज vulnerable हो जाता हूँ, लेट मी हैव दिस अनकम्फर्टेबल टॉक. नो मैटर कितना भी ख़राब लगे, हार्ड टॉक है, आई नो इट्स नॉट ईजी टू स्पीक, बट आई एम गोइंग टू हैव दिस ब्रेव फ्रंट एंड आई एम गोइंग टू टेल एवरीथिंग. मैं अपनी सच्चाई बता दूंगा. आप जाके बताते हो, पर सामने वाला जब उसको रिएक्ट आपको करता है तो आपको लगता है कि ओह दिस पर्सन रिएक्टेड, बिकॉज उस इंटेंशन के पीछे आप अगर ध्यान दें, अगर आपकी ये इंटेंशन थी कि आई एम गोइंग टू एक्सप्रेस माई सेल्फ बिकॉज समबडी अंडरस्टैंड्स मी, कोई मुझे समझेगा, somebody will respond to me in a certain manner. आप एक्सपेक्ट करें कि वो इंसान आपको किसी एक प्रॉपर मैनर में, आपको फ्रेंडली मैनर में या अंडरस्टैंड करते हुए आपको रिस्पॉन्ड करेगा. देन हेयर इज़ एन अगेन एन अटैचमेंट टू द आउटकम. आप फिर से अटैचमेंट कर रहे हैं अपने आउटकम को लेकर. यू आर इनडायरेक्टली ट्राइंग टू कंट्रोल द थिंग्स. सो लेट्स से एन एग्जाम्पल, स्पीक टू योर child if you are not feeling well about something, or you're feeling hurt about something about your child did or said to you, and you have been feeling hurt for long. So आपने सोचा चलो आज हम बच्चे से बात करते हैं. एंड आई हैव सीन पीपल कमिंग एंड टेलिंग हम तो उससे इतना अच्छे से बिहेव करते हैं, हमने सब बेस्ट दिया उसको,
वी हैव गिवन एवरीथिंग बेस्ट, वेयर वी हमने कहाँ कोई कमी करी. सो व्हाट इज़ हैपनिंग व्हेन यू आर गोइंग एंड टेलिंग एंड शेयरिंग योर चाइल्ड कि देखो बेटा, इट्स योर, आपकी ये चीज़ें जो हैं मुझे थोड़ा सा हर्ट कर रही हैं, आई एम फीलिंग हर्ट, प्रोबेबली वी कैन हेल्प यू आउट विद दैट थिंग, सो लेट मी नो अगर हम नहीं समझ पा रहे हैं. सो यू नो अ लाइट टॉक यू आर ट्राइंग टू डू. बट उस समय बच्चा रिटालिएट कर देता है एंड आपको बोलता है कि नो नहीं, यू विल नॉट अंडरस्टैंड मी, गो फ्रॉम हेयर. सो व्हाट हैपन, अगर आपने उस समय पिक कर ली एनर्जी दैट यू नो ही इज़ हर्टिंग मी अगेन, आई वाज सो नाइस टू द चाइल्ड, स्टिल उसने मेरे साथ बुरा बोला, मैंने तो वल्नरेबिलिटी प्रैक्टिस करी थी, आई वाज टोल्ड दैट थिंग. द रीज़न इज़ द चाइल्ड पिक्ड अप योर एनर्जी. आपकी इंटेंशन बिहाइंड ये थी कि अगर मैं इतना अच्छे से बच्चे से बात कर रहा हूँ तो प्रोबेबली वो बच्चा मुझे ओपन अप कर जाएगा, यू वर एक्सपेक्टिंग समथिंग. बट व्हेन यू गो विद एन इंटेंशन दैट यू डोंट नो व्हाट comes next, but I will be myself. I'll speak. If you go with an intention, I'll be who I am today and how I feel. I'll express that thing and let's see what comes next. I will not have any attachment to it. Let's see what comes next. So, what happens in that space when you are vulnerable with that intention, that you being yourself first, you don't have to be attached to what other things, you know. So उस समय क्या होगा, you will release lot of stuck energy in you. तो आपकी जो energetically जो आपकी vibrations थी, वो negative vibrations जो थी, वट एवर वाइब्रेशन ऑफ लैक वॉज देयर, वो पिक नहीं होंगी सामने वाले से. और ज़रूरी नहीं है इंस्टेंट रिजल्ट्स आपको मिले, बिकॉज यू हैव लेट गो. सो गीता में भी कहा गया ना कि कर्म करो, फल की आशा मत करो. सो व्हेन यू डिटैच योर सेल्फ फ्रॉम द आउटकम, यू डोंट ट्राई टू कंट्रोल थिंग्स, it is in that moment the life flows through you. Lot of things starts happening. So what is it that happens? So number 3, how the life flows through you. So it is, you have to be authentic. No, I'll be breaking down this into few steps. आज आप ये exercise मेरे साथ कर सकते हैं to help you understand where you are not being authentic or we are not being authentic in our all intentions. So instead of wearing a mask, which generally we all do, maybe knowingly, unknowingly, consciously, subconsciously हम कहते हैं, हम जब भी कभी कुछ कार्य करते हैं, when we do something like we have this intention of you know being nice to a person, let's say a colleague, a friend of yours whom you are not in very good terms, your mother-in-law, your wife, your husband right now, friend, relationship में बात करते हैं. अगर नहीं है तो what we do, we wear a mask. That is, instead of doing something to get something, right? Else हम क्यों कर रहे हैं, इंटेंशन क्यों कर रहे हैं, अरे आई लर्न दिस थिंग, लेट मी ट्राई दिस, आई विल गेट दैट थिंग. See, there is a, we are doing something to get something. So where we, which is called, you are being manipulative. हम manipulative होते हैं. I'm telling you because this is, maybe you're not aware of, subconsciously this is what is happening, because you go with an expectation, अरे this I learned, now this is going to work. So a lot of YouTube videos when people go for manifestations या कुछ emotional healing के लिए बात करते हैं, अरे ये सुना तो हम इसलिए try करेंगे because why? Because I'll get results. So again, that you are trying with a manipulation. Maybe I'm not saying for 100% that is, but most of the 99% this is the case. So as I told you that this happens consciously or subconscious. So it is in understanding first of all who you are and what is it that you want. Beneath that, now let's talk about what happens. You're being manipulated because you want to be nice to the person, because you want uh, the other person to respect you, maybe to understand you, to shower love and attention to you. These are the cases. So be authentic. Why are you doing it? You're doing it because this is what you want. You want attention, you want love, you want whatever the things are. Or and beneath that, आई वुड से एवरीथिंग, हर किसी के कंक्लूजन कहीं ना कहीं सारी सी एक ही आंसर आता है. व्हाट आई हैव रियलाइज इन माई लाइफ इज यू वांट टू फील गुड. That is the feeling good. So for feeling good, so even if it is your healing of your health, you want to feel better, right? So you want to feel good. So that is what the thing is. So once you get and recognize that this is what is there inside, and ये manipulation और ये mask हम हटा सकते हैं कभी भी अपना, and we can actually get to the root of what it is actually that I want, is the feel good factor. That is what you want. In your case, it could be love, attention, whatever you're seeking. Ultimately, it all comes down to be feeling good. So when you understand this awareness, when you come to that awareness, and then you come to know that
okay, this is what I want. So then you start trusting the universe more. So you have to understand now the fourth step. Your awareness level will take you to whatever you want in your life. For example, I'll give you, now you recognize this is what your true self wants, this is what you actually need. So आप अपने आप को रिलाई नहीं करते हो ऑब्वियस किसी और के ऊपर डिपेंडेंट, आपकी फील गुड फैक्टर जो आपको चाहिए, आप दूसरों के ऊपर रिलाई नहीं करते हो कि आई विल फील गुड ओनली व्हेन, if only when so and so person comes back in my life. I'll feel good only if when I'll get healed. I will feel good only if when my child respects me. I will feel good only if my in-laws or my parents or my spouse understands me. I will feel good only if I have achieved my goal. So these are the reasons. Now you are into that awareness that this is what it is happening. So the moment you understand that thing, देन यू स्टॉप मैनिपुलेटिंग, जो हमारे को सिखाया गया है हमेशा कि अगर काम ऐसे नहीं बन रहा है तो वैसे करिए. दैट इज़ वॉट वी हैव बीन ब्रॉट अप इन द एनवायरमेंट सच अ वे दैट आपकी खुद की ऑथेंटिसिटी, हु योर ट्रू नेचर इज ऑफ नथिंग बट लव. बट यू हैव बीन टॉट इन एंड ब्रॉट अप इन सच अ मैनर दैट आपको तरीका सिर्फ दो ही सिखाए गए हैं जनरली, मेरी अंडरस्टैंडिंग से. दिस इज़ वन, काम आप तो या तो डांट के करिए, बी हार्ड एंड हार्श ऑन योर सेल्फ. डांट के, अगर दूसरों के लिए तो डांटो बच्चों को जिसके ऊपर आप डोमिनेट कर सकते हो, या अगर आप बॉस हो तो अपने सबऑर्डिनेट्स के ऊपर, या आप बहुत वर्क हार्ड कर सकते हो. यू कैन बी टफ एंड रफ ऑन योर सेल्फ, हार्श ऑन योर सेल्फ. वन वे ऑफ अचीविंग वॉट यू वॉन्ट टू फील गुड. नंबर टू, और पुचकार के and bribe somebody of something. For example, in your child case, you could tell the child, if you do this thing, I'll give you that 10 lice, ye gift dunga. So what is happening in that case? The child picks up your energy. The other people will pick up your energy. They will understand what is your manipulation. So that is why जब लोगों को जैसा वो करते हैं वैसी चीज़ें नहीं मिलती डिस्पाइट टेकिंग लॉट ऑफ एक्शंस, इट्स बिकॉज योर अंडरलाइन अंडरनीथ जो आपकी एनर्जी है, जो वाइब्रेशन है, जिस पे आप इस समय वाइब्रेट कर रहे हैं, जिस फ्रिक्वेंसी, वो पिकअप करते हैं लोग. आपकी ऑथेंटिसिटी अगर होगी तो वो चीज़ पिक कर लेंगे लोग. सो दैट इज़ वाई दोज काइंड ऑफ रिजल्ट्स कम्स इवन इन व्हेन यू आर इन ऑफिस. लेट्स टेक एन एग्जांपल, आप ऑफिस में हैं एंड यू बीन टोल्ड बॉस को बटन लगाओ. आई थिंक लॉट ऑफ पीपल हैव डन दैट थिंग. सो वो ऐसे ही समझेगा काम निकल आएगा. प्रोबेबली आपने ट्राई करो, कई जगह वर्क भी कर लिया हो, बट वो ऑथेंटिसिटी उस रिलेशन में नहीं होती कभी भी. दिस यू वुड ऑल्सो अग्री, दिस इज जस्ट अ टेम्परेरी थिंग. सो यू हैव बीन टॉट and brought up with those beliefs to do that thing. Now, how this fourth step of awareness, now you know what is happening in your life. आपके रिलेशनशिप में, आपकी लाइफ में जो लैक है उसके लिए क्या हो रहा है. सो यू हैव टू ट्रस्ट. Now you can trust and you can be yourself by allowing things to come to you in reality in infinite possible way when you stop ट्रस्टिंग दैट दीज आर द ओनली थिंग्स. मेरी हैप्पीनेस, जो भी आपका एक्चुअल जो आपकी नीड थी, योर लव, अंडरस्टैंडिंग विल कम ओनली थ्रू दीज रूट्स. You open up the possibilities in finite ways when you show your authenticity, when you are who you naturally are. So you naturally are actually love. That's it. So your innate nature is just to be loving, just to be nice, just to be good, feel good. But that you don't do because of the manipulation. So when you are back into your natural state, uh, that is when the realities and the infinite possibilities open up. That is what we call in alignment. Now you're in alignment. So let's say for me, what is being natural to me in context right now is making this video. This video is coming naturally to me because this is what I've learned, and I love sharing people, because there I don't have to put a mask. I'll pretend to be somebody else. This comes natural to me, probably because I've practiced it. Remember, the practice is also there. So you may practice it, you will fall off. कई बार होगा, फिर आपको realize करना पड़ेगा. You have to do a lot of exercise. What is it I want beneath that? Get back to that feeling again. So that is how you would be doing it. And trusting the universe. Now, our alignment, how the universe, what I believe is always in miracles, because I've experienced in my life and I teach people to happen. So those of you, please note this, who believe that this healing is not possible for me, because doctors ने disclaimer दे दिया है कि ये ऐसा possible नहीं हो सकता. So let me tell you, when you are in alignment, you don't have to go for the two ways of controlling things.
because that's what you have been taught in your life. To don't do that thing, let the universe do it for you. You allow things to come to you in infinite ways beyond your imagination when you start vibrating at their frequency. Because I'll only suggest ki get into the feeling out, I want to feel good. So forget about what is happening in your life right now. Just get into the feeling of that I just want to feel good, or I have this feeling, I intend to feel good. That's it, I intend to be loved. So that is what your intention is. So your ego self will always look for familiarity, because it thinks from a पॉइंट ऑफ पर्सपेक्टिव व्हाट इट नोस, क्योंकि उसको तो यही पता है कि चीज़ें करने से मिलती हैं, ट्राई करने से, एक्शन लेने से. बट व्हाट इफ आई टेल यू एक्शन लीजिए बट अलाइनमेंट से करिए. व्हेन यू गेट इनटू इट, लेट गो ऑफ द थिंग्स, detach yourself from the outcome what is going, and start loving to do what you love to do, whatever you love to do, and do it with love, lot of love. And in that process what will happen, you will get to know yourself much. You will sense a deeper connection with yourself, who you are. You will set a deeper connection with your true self, the divine, the universe, whatever you call it. So that is how it is. Then you need not to hold on to the things anymore, because you trust the universe. You know the things are done. So the automatically you start vibrating, and that alignment will be there. The frequency will be there. I'm feeling good. So you will be in that vibrational level. So trusting that there is a reason for everything. There is a purpose if you are in pain or suffering right now. So it's not that there is something bad happening to you. This is an alarm to you. There is a purpose for that. I would say ki I have been into this journey for almost 7 years now. And it's not that people often telling me, Leena, you're so lucky. I'm telling you, awakening is not the end of everything. Awakening is just the beginning of everything. It is like becoming conscious of everything, and then in the process we all learn. So a lot of mistakes we do. So everything, it's not mistakes, a lot of learnings, in fact, I would say. So everything has a purpose. So everything which is happening right now in your life, जो अच्छी आपको नहीं लग रही है, सो इट हैज़ अ पर्पस. बिकॉज इन फिजिकल रिम, अगर हम वर्ल्डली रिम की बात करेंगे अभी, वहाँ पे आपको लगेगा गलत है. बट इन द स्पिरिचुअल रिम, इन द context of the universe or the divine, you see bigger perspective, everything is happening for your best. Everything we heard it say, because everything has a purpose behind it, to bring the best to you. So I would say, for me, if I look back in these all the years, this was the hardest lesson for me to learn, of letting go and detachment, because I was so much attached to this desire. I have to deliver something which makes sense to people. I think in the process, I learned a lot of things, and this knowledge and this wisdom came only by experiencing those failures and learning what went wrong and where I can improve. And that is why I'm able to deliver today. In the same thing, I want you to go back today, when this video ends, and reflect back in your life. कोई भी चीज़ जो आपकी परिस्थिति आपके अनुकूल नहीं हो रही थी, आपकी इच्छा के अनुकूल, वो सबसे बिगेस्ट लेसन बनी. उसकी वजह से कहीं ना कहीं आपकी लाइफ में बहुत अच्छे चेंजेस आए. सो देयर इज़ ऑलवेज अ reason, there's always a purpose for everything happening in your life. I hope this video helps you to let go of the things. Follow these 4 steps, and do mention in the comments below how, what is your takeaway for today. I would love to hear that thing. And if you would like to get such more videos and lessons and learnings, then do subscribe to our channel and stay tuned in. Namaste.